Question 1. The Constituent Assembly for Undivided India first met on option A 6 December 1946, B 9th December 1946, C 20th February 1947, D 3rd June 1947. Answer होची option B 9th December 1946. Question 2. In a federal states, option A states are more powerful than the center, B center is more powerful than states, C a presidential form of government functions, D constitution effects division of powers between the center and states which safeguards against transgression of jurisdiction. Answer होची option A states are more powerful than the center. Question 3. The cabinet mission to India was headed by option A Stafford Case, B A.V. Alexander, C Lord Pethick Lawrence. Answer होची C Lord Pethick Lawrence. Question 4. When did the first linguistic state of Andhra come into existence? Option A October 2, 1953, B October 1, 1953, C April 1, 1953, D January 5, 1953. Answer होची option B October 1, 1953. Question number 5. The most essential feature of the parliamentary form of government is the option A sovereignty of the parliament, B written constitution, C independent judiciary. Answer होची option C independent judiciary is the most essential feature of the parliamentary form of the government. Question number 6. The directive principles of state policy included in the Constitution of India have been inspired by the Constitution of option A USA, B Ireland, C Canada, D Australia. Answer होची 6 B Ireland. The directive principles of state policy Ireland रो follow करा जायछि. Question number 7. Which of the following is not a unitary feature of the Constitution? Option A appointed of governors, B Constitution as the main law of land, C amendment of the Constitution, D financial dependence of the states. Answer हेबो B Constitution as the main law of land. एटा छाड़ी की तीनटा जाक जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, सी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स एगुड़ा सब फीचर होचे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो, किंतु बी कॉन्स्टिट्यूशन एज द मेन लॉ ऑफ लैंड फीचर नुहे. क्वेश्चन नंबर 8. टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर अ फ्रेश कंसिडरेशन? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी बिल्स, B bill seeking amendment to the constitution, C finance bills, D bills passed by both the houses of the parliament. Answer हेबो C finance bills. ये फाइनान्स बिल्स प्रथमे प्रेसिडेंट को ठारू सम्मति आनिकी करा जाय थाए, तेणु पुनर्बार तांको पाखकु पठा जाए नहीं. तेणु आंसर होची C फाइनान्स बिल्स. Question number 9. The Secretary General of the Lok Sabha, who is the chief of its secretariat, is option A elected by the Lok Sabha, B elected by both houses of parliament, C appointed by the speaker, D appointed by the president. तेणु the Secretary General of the Lok Sabha, who is the chief of its secretariat, is appointed by the speaker. Question number 10. तेणु 9 रा आंसर होबो C appointed by the speaker. Question number 10. A candidate to become a member of the Rajya Sabha should not be less than option A 21 years, B 25 years, C 30 years, D 35 years. तेणु राज्यसभार सदस्य हेबा पई
जड़े कैंडिडेट को 30 वर्ष हेबा आवश्यक। तेणु आंसर हम सी 30 years। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ लॉन्ग कैन ए पर्सन कंटिन्यू टू बी ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए 3 months, बी 6 months, सी 1 year, डी नो टाइम लिमिट। आंसर हम बी 6 months। क्वेश्चन नंबर तेणु तांकु जो 6 मास पर से जेमिति हेले जेकोसी जो राज्यसभा हो कि लोकसभा सदस्य होगापी बाध्य। क्वेश्चन नंबर 12 हु एमंग द फॉलोइंग has a right to attend the Lok Sabha session though he is not a member। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑडिटर जनरल, डी अटॉर्नी जनरल। तेणु आंसर हम डी अटॉर्नी जनरल। से जड़े लोकसभार सदस्य न ही राइट अच्छी से जो लोकसभा सेशन रे अटेंड रहा। क्वेश्चन नंबर 13 द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलिस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर। तो एटलिस्ट 2 थर बसे लोकसभार सेशन। आंसर हम ऑप्शन ए ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द। आंसर कौन ना ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी यूनियन कैबिनेट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर होची ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस रे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करता। क्वेश्चन नंबर 15 द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी चेयरमैन यूपीएससी रा चेयरमैन। कोटा हम तो आंसर होची बी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 आपण माने निजे निजे आगुआ उत्तर भाबिकी रखि थांतु। देखंतु आपण को 20टा क्वेश्चन भितर केतेटा क्वेश्चन आसी आउ केतेटा क्वेश्चन ठीक आंसर देले मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु। क्वेश्चन नंबर 16 हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ओनली लोकसभा, बी राज्यसभा, सी एनी विधानसभा, डी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आंसर हम डी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17 which of the following qualifications is not essential for a person to become the vice president। ऑप्शन ए ही मस्ट टू बी ए ग्रेजुएट, बी ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, सी ही मस्ट नॉट बी लेस दैन 35 years, डी ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तेणु आंसर होची ऑप्शन ए ही मस्ट टू बी ए ग्रेजुएट। एटा क्वालिफिकेशन माने एसेंशियल नुहे गोटे राज्यसभार जो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हेबा पई। तेणु आंसर हम ऑप्शन ए ही मस्ट टू बी ए ग्रेजुएट। तापर आसिला 18 द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर। आंसर हम सी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हु और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तेणु द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होची कस्टोडियन कहार ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स। तो आंसर होची 20 रो बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 1 द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट एक्ट, बी 52nd अमेंडमेंट एक्ट, सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, डी 34th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर होची ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स द फॉलोइंग प्लेड ए मेजर रोल। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल,
बी वल्लभभाई पटेल एंड वीपी मेनन, सी पानिकर एंड कुंजूर, डी एस के धर। आंसर होची ऑप्शन बी वल्लभभाई पटेल एंड वीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रियम्बल वाज प्रपोज्ड बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी बाय ऑप्शन ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आंसर होची ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी बी आर अम्बेडकर, सी डी डी वासु, डी अर्नेस्ट वार्कर। तो आंसर होची ऑप्शन डी अर्नेस्ट वार्कर। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is not related to the constitutional government? ऑप्शन ए coalition government, बी presidential government, सी hierarchy government, सी ऑप्शन डी फेडरल गवर्नमेंट। तो आंसर होची ऑप्शन सी हायरार्की गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949? ऑप्शन ए पीपल ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी कैबिनेट, डी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आंसर होची ऑप्शन ए पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution? ऑप्शन ए right to freedom of religion, ऑप्शन बी right to property, सी right to equality, डी right to constitutional remedies। आंसर होची ऑप्शन डी right to constitutional remedies। क्वेश्चन नंबर 8, the ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its ऑप्शन ए preamble, बी directive principle of state policy, सी fundamental rights, डी 7 schedule। तो आंसर होची ऑप्शन बी directive principles of state policy। क्वेश्चन नंबर 9, one of the following is a law that favors women's interest? ऑप्शन ए protection of civil rights, बी immoral traffic prevention act, ऑप्शन सी none of this। आंसर होची ऑप्शन बी immoral traffic act। क्वेश्चन नंबर 10, the purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish option A political democracy, B social democracy, C Gandhian democracy, D social and economic democracy। आंसर होची ऑप्शन डी social and economic democracy। Question number 11, which one of the following articles of the directive principles of state policy deals with the promotion of international peace and security? ऑप्शन ए आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 48A, सी आर्टिकल 43A, ऑप्शन डी आर्टिकल 41। तो आंसर होची 11 रो ऑप्शन ए आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 12, in the Indian Constitution the right to equality is granted by 5 articles. They are ऑप्शन ए आर्टिकल 16 to 20, बी आर्टिकल 15 to 19, सी आर्टिकल 14 to 18, डी आर्टिकल 13 to 7। आंसर होची ऑप्शन सी आर्टिकल 14 to 18। क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following ways can Indian citizenship be acquired? ऑप्शन ए by descent, बी by naturalization, सी by registration, डी all of these। आंसर होची ऑप्शन डी all of these। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following classes cannot avail of some fundamental rights available to citizens? ऑप्शन ए एनवी अलियंस, बी फ्रेंडली अलियंस, सी ऑल अलियंस, डी नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होची 14 रो ए एनवी अलियंस। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 to 1947? ऑप्शन ए आर के सनमुखम सेट्टी, बी जॉन मठाई, सी लियाकत अली खां। तो आंसर होची ऑप्शन सी लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? ऑप्शन ए आर्टिकल 61, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 76, डी आर्टिकल 356। आंसर होची ऑप्शन ए आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, बी द इलेक्शन कमीशन, सी द पार्लियामेंट, डी बोथ ए एंड बी। आंसर होची ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु एमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आंसर होची ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म ऑफ द राज्यसभा वाज फिक्स्ड बाय द
ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, डी कैबिनेट। आंसर होची बी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, the salaries and allowances of the judges of the High Court are charged to the option A Consolidated Fund of India, B Consolidated Fund of the State, C Contingency Fund of India, D Contingency Fund of the State। Answer is option B Consolidated Fund of the। Question number 1, the oath to a High Court judge is administered by the option A Chief Justice of India, B Chief Justice of that High Court, C Governor, D President। Answer होची option C Governor। Question number 2, the Supreme Court was set up under option A Regulating Act 1773, B Pitt's India Act 1784, C Indian Council Act 1861, D Indian Council Act 1892। Answer होची option A Regulating Act 1773। Question number 3, the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of or fact belongs to option A the President, B High Courts, C the Governor, D all of the above। Answer होची option A the President। Question number 4, the salaries and allowances of the Council of Ministers of the state government are paid from the option A Reserve Bank of India, B Treasury of the state government, C Contingency Fund of the state, D Consolidated Fund of the state। Answer होची D Consolidated Fund of the state। Question number 5, which of these articles provide for disqualification of a person from the membership of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state? Option A Article 190, B Article 191, C Article 192, D Article 193। Answer होची option A Article 190। Question number 6, when a bill is reserved by the governor for the consideration of the president, within what time he must return the bill? Option A 3 months, B 6 months, C 1 year, D there is no time limit। Answer होची option D there is no time limit। Question number 7, which one of the following is in the concurrent list in the Constitution of India? Option A Population Control and Family Planning, B Public Health and Sanitation, C Capitation Taxes, D Carding Down। Answer होची option A Population Control and Family Planning। Question number 8, which of the following subjects comes under the concurrent list? Option A Citizenship, B Interstate Rivers, C Trade Union, D Local Government। Answer होची option C Trade Union। Question number 9, which among the following features of a federal system is not found in the Indian political system? Option A dual citizenship, B distribution of powers between the federal and state governments, C supremacy of the constitution, D authority of the courts to interpret the constitution। Answer होची 9A dual citizenship। Question number 10, Panchayat Raj was first introduced in India in October 1959 in option A Rajasthan, B Tamil Nadu, C Kerala, D Karnataka। Answer होची option A Rajasthan। Question number 11, the need for constitutional sanction to village panchayats was first felt by the option A Balwant Rai Mehta Committee, B Ashok Mehta Committee, C G.V.K. Rao Committee, D L.M. Singhvi Committee। Answer होची D L.M. Singhvi Committee। Question number 12, Nagarpalika bill was first introduced in Parliament during the Prime Ministership of option A V.P. Singh, B Chandrasekhar, C Rajiv Gandhi, D V.V. Narasimha Rao। Answer होची C Rajiv Gandhi। Question number 13, 11th schedule of the Constitution relating to the Panchayats contains option A 18 items, B 28 items, C 19 items, D 29 items। Answer होची D 29 items।
Question number 14. Who among the following is hailed as the father of local self-government in India? Option A. Lord Mayo, B. Lord Ripon, C. Jawaharlal Nehru, D. Mahatma Gandhi. Answer होची B. Lord Ripon. Question number 15. Who consolidates the plans prepared by the panchayats and municipalities in the district? Option A. State Planning Commission, B. Public Accounts Committee, C. District Planning Committee, D. District Planning and Development Council. Answer होची C. District Planning Committee. तेणु C. District Planning Committee. Question number 16. Which one of the following languages is not recognized in the 8th schedule to the Constitution of India? Option A. English, B. Sanskrit, C. Urdu, D. Nepali. Answer होची option A. English. Question number 17. The provision of amending the constitutional provision is given in. Answer होबो B. Answer होबो option C. Part XX Article 368. Answer होबो C. Question number 18. How many states are required to ratify certain amendments to the Constitution? Option A. Not less than half the number, B. 3/4 of the number, C. At least 10 states, D. all states in some cases. Answer होची option A. Not less than half the number. Question number 19. The president rule is imposed for the period of. Option A. 3 months, B. 6 months, C. till the next election is held, D. it depends upon the president's wish. Answer होबो B. 6 months. Question number 20. In which article of our constitution is the finance commission deal with? Option A. Article 280, B. Article 380, C. Article 281, D. Article 381. Answer होबो option A. Article 280. Question number 1. Which among the following is the 28th state of India? Answer होबो option C. Jharkhand. Question number 2. By which of these amendments the name of Orissa was changed to Odisha and Oriya to Odia? Answer होबो C. 96 amendments. Question number 3. The powers of the election commission are given in which of the following articles of the Constitution? Option A. Article 286, Article 356, Article 324, D. Article 362. Answer of option C. Article 324. Question number 4. Who has the power to decide on election petition? Option 1. District Court, 2. Supreme Court, 3. High Court, 4. Tribunals. Answer होबो option D. 2 and 3. Supreme Court and High Court. Question number 4. Question number 5. The National Commission for Women was set up in. Answer होबो B. 1992. Question number 6. Who is regarded as the father of all India services? Option A. Lord Macaulay, B. Lord Cornwallis, C. Sardar Patel, D. B.R. Ambedkar. Answer है option C. Sardar Patel. आउ जदि क्वेश्चन थिबो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया तो आंसर होबो लॉर्ड कॉर्नवालिस. आउ जदि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेस थिबो क्वेश्चन रे आंसर होबो सरदार पटेल. क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी? आंसर होबो डी ऑल ऑफ द एबव माने क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, creation or abolition of upper houses in state legislature, C. reconstitution of existing states. Question number 80. A. proclamation of national emergency automatically suspends. Option A. all fundamental rights, B. right to freedom, C. right to constitutional remedies, D. 'no fundamental right'. Answer है वो, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, डी नो फंडामेंटल राइट. Question number 81.
B. Right to freedom. Question number 9. The amendment regarding the formation of a new state by separating territory from any other state must be passed by answer ହେବ D. Both the houses of parliament, and before that the opinion of the state is to be ascertained by the president. Question number 10. A person to be qualified for standing in a panchayat election must have attained the age of option A 21, B 18, C 25, D 30. Answer of option A 21. Question number 11. In 1977, under whose chairmanship the Panchayat Raj Committee was formed? Option A Ashok Mehta, B Sardar Saran Singh, C Balwant Rai Mehta. Answer have option A Ashok Mehta. Question number 12. Which of the following subjects comes under the concurrent list? Option A citizenship, B interstate rivers, C trade union, D local government. Answer of option C trade union. Question number 13. Which of the following is not included in the state list in the Constitution of India? Option A law and order, B prison, C criminal procedure code, D police. Answer of option C criminal procedure code. Question number 14. The Vidhan Sabha is option A the permanent house of state legislature, B indirectly elected, C subject to dissolution, D has little importance in the state government. Answer of option C subject to dissolution. Question number 15. Money bill can be introduced in the state legislature with the prior consent of the option A president, B governor, C speaker, D chief minister. Answer of option B governor. Question number 16. The chairman of the legislative council is appointed by the governor, C elected by the members of the legislative council from among themselves. Answer of option C. The chairman of the legislative council is elected by the members of the legislative council from among themselves. Question number 17. Who is the longest serving chief minister in India? Option A Manik Sarkar, B Jyoti Basu. Answer of option B Jyoti Basu. Question number 18. To whom does a judge of the Supreme Court address his resignation if he wants to leave office before his term is complete? Option A President, B Prime Minister. Answer of option A President. Question number 19. Who was the chairman of the first Law Commission of India after independence? Option A MC Settlebad, B B.M. Rao. Answer of option A. Question number 20. Who among the following had the longest tenure as the Chief Justice of India? Option A Y.V. Chandrachud, B R.S. Pathak. Answer of option A Y.V. Chandrachud. Question number 1. Chief Minister of a state is responsible to option A Governor, B Legislative Assembly, C Prime Minister, D Rajya Sabha. Answer होची option B Legislative Assembly. Question number 2. How many times the President of India can seek re-election to his post? Option A once, B 2 times, C 3 times, D any number of times. Answer होची option D any number of times. Question number 3. Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? Option A President, B Prime Minister, C Supreme Court, D Speaker of Lok Sabha. Answer होची option A President. Question number 4. Who among the following held office of the Prime Minister for the shortest period? Option A Lal Bahadur Shastri, B VP Singh, C Chandrasekhar, D Charan Singh. Answer होची option D Charan Singh. Question number 5. Under whose advice the President of India declares emergency under Article 352?
ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी कैबिनेट, सी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, डी प्राइम मिनिस्टर। आंसर होची ऑप्शन बी कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए 2.5 years, B 2 years, C 1 years, D 6 months। आंसर होचे ऑप्शन डी 6 months। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, ऑप्शन ए माउंट बैटन प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन प्लान, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर होचे ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 8, द concept of welfare state is included in which part of the Indian Constitution? Option A, the preamble of the Constitution, B, fundamental rights, C, directive principles of state policy, D, fourth schedule of the Constitution। आंसर होचे ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम ए सोवरेन बॉडी आफ्टर, ऑप्शन ए January 26, 1950, B November 26, 1929, C August 15, 1947, D August 26, 1949। आंसर होचे ऑप्शन सी August 15, 1947। क्वेश्चन नंबर 10, the inspiration of liberty, equality, fraternity was derived from, ऑप्शन ए अमेरिकन रिवोल्यूशन, बी फ्रेंच रिवोल्यूशन, सी रशियन रिवोल्यूशन, डी नन ऑफ दिस। आंसर होचे ऑप्शन बी फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज, क्वेश्चन ऑप्शन 11 हाँ सी हम राइट आंसर, सोवरजेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वेयर प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी एन ऑर्डर इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, डी ए लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। आंसर होचे ऑप्शन ए एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, बी ग्रांट्स राइट टू इक्वलिटी, सी abolishes untouchability, डी ग्रांट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आंसर होचे ऑप्शन सी abolishes untouchability। क्वेश्चन नंबर 14, total number of the members in a legislative council should not exceed that of a legislative assembly by 1/3 ना 2/3। आंसर होचे ऑप्शन ए 1/3। क्वेश्चन नंबर 15, Anglo Indian representatives in Lok Sabha are nominated in terms of the article, option A 331, B 80, C 370, D 333। आंसर होची 15 रो A 331 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 of the members of the Rajya Sabha retire after every 1 year ना 2nd year ना 3rd year ना 5th year। आंसर होचे ऑप्शन बी एवरी 2nd year रे 1/3 मेंबर्स राज्यसभार 1/3 मेंबर्स रिटायर नियंती। क्वेश्चन नंबर 17, द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, ऑप्शन सी होचे राइट आंसर 250। क्वेश्चन नंबर 18, Who was the first Prime Minister of India? Option A Dr. Rajendra Prasad, B Mahatma Gandhi, C Jawaharlal Nehru। आंसर होचे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following can attend meetings of the Union Cabinet? आंसर होचे ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, Who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? आंसर होचे ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द
ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, डी पार्लियामेंट। आंसर होची ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर आंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पी उपेंद्र। आंसर होची ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। Question number 3. The first state to become bifurcated after independence was option A Bengal, B Bombay, C Punjab, D Assam. Answer is option B Bombay. Question number 4. For the philosophy underlying our constitution, the historic objective resolution was moved in the Constituent Assembly on 22nd January 1947 by Jawaharlal Nehru. क्वेश्चन 4 आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी ए फेडरल पॉलिटी अकिन टू द अमेरिकन मॉडल। आंसर इज ऑप्शन डी a federal polity akin to the American model. Question number 6. Fundamental freedoms under Article 19 are suspended during emergency caused by A. War or external aggression, B. Failure of a constitutional machinery of a state, C. Internal armed rebellion, D. Financial crisis. Answer होची A. War or external aggression. Question number 7. Which of the following is not a fundamental right? Option A right to equality, B right to strike, C right to freedom of religion, D right against exploitation. Answer होची option B right to strike is not a fundamental right. Question number 8. The president can promulgate an ordinance. Option A when the Lok Sabha has been dissolved, B when there is a conflict between the two houses regarding a particular bill, C when a bill passed by the Lok Sabha is not passed by the Rajya Sabha, D when both the houses of the parliament are not in session. So answer is option D when both the houses of the parliament are not in session. Question number 9. Who presides over the Lok Sabha if neither the speaker nor the deputy speaker is available? Option A member of the House of People appointed by the President, B a member chosen by Council of Ministers, C the senior most member of the Rajya Sabha, D the senior most member of the Lok Sabha. Answer होची option D the senior most member of the Lok Sabha. Question number 10. The quorum required to hold meeting of the legislative chambers is what fraction of the total membership of the house? Answer होची option D 1/10. Question number 11. The union territories get representation in Lok Sabha, B Rajya Sabha, C both houses of parliament, D none of these. Answer होची option C both houses of parliament. Question number 12. The chairman of Rajya Sabha is elected by the members of Rajya Sabha, elected by members of both the houses of parliament, C nominated by the Rajya Sabha. Answer होची option B elected by members of both the houses of parliament. Question number 13. The term of Lok Sabha is normally 4 years na 5 years, 6 years na 7 years. Answer होची option B 5 years. Question number 14. The legislative powers are vested in the President, B Parliament, C Prime Minister, D Governor. Answer होची option B Parliament. Question number 15.
If the Speaker of the lower house of a state wants to resign, his letter of resignation is to be addressed to the option A President, B Governor, C Chief Minister, D Deputy Speaker. Answer is option D Deputy Speaker. Question number 16. The governor of a state is appointed by the President on the advice of the option A Chief Minister, B Chief Justice, C Prime Minister, D Vice President. Answer is option C Prime Minister. Question number 17. The President of India can be removed from his office by the President of India can be removed from his office by the Prime Minister, B Lok Sabha, C Chief Justice of India, D Parliament. Answer is D Parliament. Question number 18. The minimum age required for becoming the Prime Minister of India is option A 25, B 30, C 40, D 35 years. Answer is A 25 years. Question number 19. The impeachment proceedings against the Vice President can be initiated option A only in Lok Sabha, B only in Rajya Sabha, C in either House of Parliament, D in neither House of Parliament. Answer is B only in Rajya Sabha. Question number 20. In whom are the powers of judicial review vested in India? Option A President, B Parliament, C all the courts, D Supreme Court and all the high courts. Answer is D Supreme Court and all the high courts. Question number 1. The members of the Constituent Assembly were option A elected by provincial assemblies, B elected directly by people, C nominated by the government, D only representatives of the princely states. Answer of option A elected by provincial assemblies. Question number 2. The Indian Constitution does not follow the model of the Constitution of UK, USA, USSR, Ireland. Answer of option C USSR. Question number 3. When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was answer of A 299. Question number 4. Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? Option A single citizenship, B dual judiciary, C a federal Supreme Court to interpret the Constitution. Answer is C a federal Supreme Court to interpret the Constitution. Question number 5. The preamble of our Constitution is A part of the Constitution, contains the spirit of the Constitution, is a limitation upon the granted power, D none of these. Answer of option B contains the spirit of the Constitution. Question number 6. In Indian Constitution there is no provision for option A religious rights, B political and social rights, C educational rights, D economic right. Answer of D economic rights. Question number 7. Fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in 1971, 1972, 1975, 1976. Answer of option D 1976. Question number 8. Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented option A in the Supreme Court only, B in the High Court only, C either in the Supreme Court or in the High Court, D first in the Supreme Court and then in the High Court. Answer of option C
either in the Supreme Court or in the High Court. Question number 9. A bill referred to a joint sitting of the two houses of the Parliament is to be passed by option A simple majority, B 2/3 majority, C 3/4 majority, D absolute majority of total membership. Answer for option A is simple majority. Question number 10. A money bill passed by the Lok Sabha has to be passed by Rajya Sabha within option A 14 days, B 21 days, C 1 month, D 3 months. Answer above option A 14 days. Question number 11. The President gives his resignation to the option A Prime Minister, B Vice President, C Chief Justice, D Parliament. Answer of option B Vice President. Question number 12. The Union Council of Ministers is appointed by the option A Prime Minister of India, B Parliament, C President of India on the advice of the Prime Minister. Answer of option C President of India on the advice of the Prime Minister. Question number 13. The central government's exclusive powers are enumerated in the option A concurrent list, B state list, C union list, D federal list. Answer होगा C union list. Question number 14. Which of the following reads is issued by the court in case of illegal detention of a person? Habeas corpus, B mandamus. Answer होगा A habeas corpus. Question number 15. Separation of the judiciary from the executive is enjoined by option A preamble, B directive principles, C judicial decision. Answer होगा B directive principles. Question number 16. The words social, secular and the unity and integrity of the nation have been added to the Indian Constitution by which amendment? Option A 38th, B 40th, C 42nd, D 48th. Answer होगा C 42nd amendment. Question number 17. Parliamentary elections are organized by the President, Prime Minister, Lok Sabha Election Commission. Answer होगा C Lok Sabha. Question number 18. 7th schedule of the Constitution deals with option A provision of oath, B President and Governors, C 15 Indian languages, D 3 lists regarding legislation. Question number 18 answer होगा D 3 lists regarding legislation. Question number 19. Question number 19. The States Reorganization Act was passed in the year option A 1947, B 1950, C 1956, D 1952. Answer option C 1956. Question number 20. Planning Commission is a option A statutory body, B executive body, C autonomous body, D none of the above. Option A right answer statutory body. Name the ancient philosopher who wrote the Republic. Option A Aristotle, B Plato, C Diophantus. Answer होची option B Plato. The Republic रा writer होचंदी Plato. Who was the teacher of Plato? Option A Socrates, B Aristotle, C Xenophon, D none of these. The answer होची option A Socrates. Question number 3. Who said that
all men are created equal. Option A US Constitution, B French Constitution. Answer is option A US Constitution. Question 4. The type of equality which believes that all should be treated as equal partners in society is called option A civil equality, B political equality, C social equality, D natural equality. Answer होउछि option C social equality. Question number 5. There are two pillars of democracy. Example liberty and dash. Option A law, B fraternity, C equality, D none of the above. Answer होउछि liberty and fraternity. Sorry equality. Answer number C. Answer होउछि equality. Liberty and equality. Question number 6. Type of liberty which a man enjoys as a member of civil society is called option A civil liberty, B political liberty, C natural liberty, D economic liberty. Answer होउछि option A civil liberty. Question number 7. The word justice has been derived from justitia which belong to language. Option A Latin, B English, C French. Answer होउछि option A Latin. Question number 8. Who said that without the party system the state has no elasticity? Answer होबो कोना option A Finner, B Garner, C McLever. Answer होउछि option C McLever. Question number 9. Which one of the following merits of political parties has been wrongly listed? Option A political parties impart political education to people, B political parties eliminate nepotism and favoritism, C political parties are essential for the successful working of a cabinet system of a government. Answer होउछि B political parties eliminate nepotism and favoritism. Eta wrong. Question number 10. In USSR there is option A one party system, B two party system, C multi party system, D plural party system. Answer होबो option A one party system. Question number 11. Gandhians are continuing as a pressure group in India because option A the control parliament, B their philosophy is lauded by majority, C they had associations and worked in the past with Gandhiji. Answer is option C. They had association and worked with in the past with Gandhiji. Question number 12. Local governments are found only in option A federal form of government, B unitary form of governments, C dictatorships, D in all form of governments. Answer होबो 12 D in all form of governments. Option D is the right answer. Question number 13. Which one of the following functions is not performed by the local government bodies? Option A protection of life and property, B health and sanitation, C construction of roads, bridges, public baths, etc. D maintenance of police force. Answer होबो D maintenance of police force. Question number 14. Separate communal electorate system aimed at securing the interest of option A educated Indians, B scheduled caste, C religious minorities. Answer होउछि religious minorities. Option C. Question number 15. The citizens who are allowed to participate in voting process are called option A candidates, B electorates, C none of the above. Answer होबो B electorates. Question number 16. Which of the following is enforceable in a court of law? Option A directive principles, B fundamental rights, C fundamental duties, D preamble. Answer होबो B fundamental rights. Question number 17. Who decides the number of judges in a high court? Option A state government, B president, C
गवर्नर ऑफ द स्टेट डी पार्लियामेंट आंसर है बी प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी डेज टाइम is given for the candidates to file their nominations from the date of notification of the election. Option A 2 days, B 4 days, C 6 days, D 80 days. Answer of D 80 days. Question number 19. The provision for an election commission is provided in article option A 320, B 324, C 329, D 327. Answer of B 324 article रे. Question number 20. Which one of the following pairs is not correctly matched? Sorry, এটা wrong. Question number 20. Question होची who described Indian politics as politics of scarcity? Option A Myron Winner, B Paul R. Brass, C Atul Kohli, D Maurice Jones. आंसर होगा ए माइरन वाइनर डिस्क्राइब करथिले कि इंडियन पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी. क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डिनास्टी इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 4 लायंस, बी चैरियट व्हील, सी हॉर्स, डी वार्ड्स सत्यमेव जयते. आंसर होची ऑप्शन ए 4 लायंस. क्वेश्चन नंबर 2 द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन ऑप्शन ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी न्यू दिल्ली. तो आंसर होची ऑप्शन डी न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 3 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन ऑप्शन ए 30 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 होची राइट आंसर. 3 नंबर बी होची आंसर 26 जनवरी 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन आमर कार्यकारी होइथिला. क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन ए पी उपेंद्र, बी मालगांकर, सी अनंत शयनम आयंगर, डी हुकुम सिंह. ऑप्शन सी राइट आंसर अनंत शयनम आयनगर. क्वेश्चन नंबर 5 चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी एस राधाकृष्ण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल. तो आंसर होची बी आर अम्बेडकर. क्वेश्चन नंबर 6 the Indian constitution closely follows the constitutional system of option A USA, B UK, C Switzerland, D USSR. तो आंसर होची 6 रो ऑप्शन बी राइट आंसर UK. क्वेश्चन नंबर 7 which of the following does not conform to the parliamentary system prevalent in India? ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ पावर्स, बी मल्टी पार्टी सिस्टम, सी प्लूराल एग्जीक्यूटिव, डी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो 7 नंबर रो आंसर होचे सी प्लूराल एग्जीक्यूटिव. 7 नंबर सी होची राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the parliamentary system of government from ऑप्शन ए यूके, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी यूएसए. तो आंसर होची 8 नंबर ए यूके. क्वेश्चन नंबर 9 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज ऑप्शन ए फेडरल, बी यूनिटरी, सी पार्लियामेंटरी, डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. तो राइट आंसर होची 9 नंबर डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. क्वेश्चन नंबर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of option A USA, B Canada, C Ireland, D UK. तो आंसर होची 10 नंबर बी कनाडा होची राइट आंसर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the scheme of Indian Federation
तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए सेक्युलरिज्म, बी सोशलिज्म, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डी फेडरलिज्म। तो आंसर होची ऑप्शन डी फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन includes all except option A adult franchise, B equality of status, C fraternity, D justice। आंसर होची adult franchise। क्वेश्चन नंबर 13 Indian president and prime minister are a replica of the heads of the state of which country? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी USA, C Ireland, D USSR। तो आंसर होची ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेम्बल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सी फंडामेंटल राइट्स, डी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर होची 14 नंबर रो ऑप्शन डी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Question number 15 the fundamental right that aims at the abolition of social distinctions is the right to property, against exploitation, to equality ना to freedom। आंसर होची 15 नंबर सी to equality। Question number 16 on whom does the constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? Option A parliament, B supreme court, C president, D state legislature। तो 16 नंबर आंसर कौन होची बी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द cultural and educational rights granted? Option A article 29 and 31, option B article 29 and 32, option C article 29 and 30, option D article 30 and 31। तो आंसर होची ऑप्शन सी आर्टिकल 29 and 30। क्वेश्चन नंबर 18 which part of the constitution deals with the directive principles of state policy? Option A part III, option B part IB, option C part II, D part V। आंसर कौन ना बी ऑप्शन बी पार्ट IV। क्वेश्चन नंबर 19 protection and interests of the minorities is envisaged in which article of the constitution? Option A article 14, B article 19, C article 29, D article 32। आंसर होची आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 20 right to constitutional remedies comes under ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी लीगल राइट्स, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डी नेचुरल राइट्स। आंसर होची ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए अबाउट 6 months in 1949, बी अबाउट 3 years since December 9, 1946। आंसर होची एक नंबर बी अबाउट 3 years since December 9, 1946। क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद। आंसर होचे बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was created by ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी सिमला कॉन्फ्रेंस। आंसर होची कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 4 ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज? ऑप्शन बी
द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। आंसर होची ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन प्रियम्बुल। ऑप्शन ए प्रियम्बुल, ऑप्शन बी प्रियम्बुल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आंसर होची ऑप्शन बी प्रियम्बुल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। ऑप्शन ए लीगल राइट ना फंडामेंटल राइट। आंसर होची राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल। आंसर होची बी एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट। आंसर होची बी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर। आंसर होची ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वाज वीवी गिरी ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आंसर होचे 10 नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 11 द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ना सुचेता कृपालिनी। आंसर होची सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रेसिडेंट्स रूल in a state means that the state is ruled by। option A the governor of the state, the president directly। answer होची option A the governor of the state। question number 13 Indian constitution was amended for the first time in। answer होची option B 1951। question number 14 the power to decide an election petition is vested in the। option A parliament ना supreme court, C high court ना election commission। answer होची D election commission। question number 15 which of the following is not a panchayat raj institution। option A ग्राम सभा, B ग्राम पंचायत, C ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी न्याय पंचायत। आंसर होची ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी कमीशन। ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन, सी फाइनेंस कमीशन। आंसर होची ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज on the basis of। option A religion ना population। आंसर होची population। क्वेश्चन नंबर 18 when did Delhi become a union territory। option A 1947, 1950, 1956। आंसर होची ऑप्शन सी 1956 रे दिल्ली यूनियन टेरिटोरी होइथिला। क्वेश्चन नंबर 19 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी impeached by। option A सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट। तेणु आंसर होची पार्लियामेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 which of the following countries has the briefest constitution in the world। option A फ्रांस, बी USA। तो आंसर होची USA।